Jai Ma. I think the first part we touched mainly on the why of integral yoga. So, once again, integral yoga is not yet another path to divine realization, not one of the many paths to find God. Integral yoga is the path which finds the divine, but equally importantly, works towards manifesting the divine in earthly life. So, accordingly, it has primarily two labors. The mother uses the word the higher perfection and the lower perfection. One labor is directed towards discovery of the divine, which is fundamental, without which everything else has no meaning. The second labor is that when the divine manifests, if the instrument is not ready, then we'll end up in the same cul-de-sac. That, like everywhere else, we have found the divine, but the instrument cannot manifest. So this is the double labor required in this yoga, which makes it a little different and a little more difficult than the other yogas. At the same time, we need to remember that it's not so much the process and the method, but the intent behind the process and the method. So, what is meant by that is that we may not do a thing in the correct way or whatever. We may not be able to do it as we are supposed to do it, expected to do it. But then, once the intent is right, then constantly there is the hand of the divine grace, which will lead us through everything and mold perfection. Of course, if we collaborate by our own effort, it will facilitate the process. But if there is the central surrender to the Divine Mother's grace with the correct aspiration, then she will take us through that. Molding may take a little longer, but eventually it will be done. Because the mainstay of this yoga is the Divine Mother's grace. So, two things which are important is the intent, why we are doing the yoga. So, if I am doing the yoga to get power, if I am doing the yoga for moksha, if I am doing the yoga so that my personal life may be fine, that kind of relation one can have with the divine, nothing wrong with that. But then my intent will limit where I will go. I may be in front of a professor who can teach me the highest mathematical equation. But if I go to the professor and ask him, sir, I just don't understand this simple algebra equation, he will teach me only that much because I am not ready for more. So the mother says, first thing necessary is aspiration for the divine. That's the fundamental mainstay. Any yoga, if that aspiration is not there, I may do pranayam, I may do meditation, I may do everything, but it may be just to be healthy, just to be strong, look good, look a yogi, all these things. So then that all these practices will go down the drain like Sisyphus labor. So most important is, why do I want to take up the yoga? So there are two of these things. One is to find the divine. Second, find the divine for the sake of the divine. That's why the mother says these two things. Not for my own sake. I don't want to find the divine only so that I get mukti, so that I can live in peace and bliss. No, finding the divine so that whatever the divine wants to do through me, I am ready and prepared and offered to the divine. So this is the fundamental thing. And if one has this, then it is called as the call for the yoga. One seeks the divine, and one seeks the divine not for oneself but for the sake of the divine. That's the main important element. Once that is there, then we see that there is a double labor. One is to find the divine, and second is to prepare our instrument to express the divine. So finding the divine is in Sri Aurobindo's yoga. It's not enough to find the divine in one side, one aspect, but in its totality. So meaning thereby that the divine is not only within me, divine is also within the world, in all the creatures. Everything is in the divine, and the divine has become everything. It's the most difficult part, because all the appearance is contradicted. But where do we begin? It's very simply, we start with finding the divine within us, because that's the nearest to us.
This part one of the labor. So, finding the divine within, the mother gives a very beautiful, simple way. Concentrate in the heart. Heart is not the anatomical heart, but anywhere in the center of the chest, on the mother's presence. It doesn't matter how we conceive, but that's why the form is so useful. So we can concentrate on the mother's form in the heart or on the presence. Ultimately, the form will lead us to the sense of the mother's presence in the heart. And then we concentrate, we can take the help of Nam Jap. Ma, 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 ma. And then aspiration. Aspiration is Mother, take me, Mother, use me, Mother, peace, Mother, light, Mother, your wideness, whatever comes naturally. So basically, concentration in the heart, and when to do it? Well, if possible, all the time. One can speak while being concentrated in the heart, one can listen while being concentrated in the heart, one can eat while concentrated in the heart, one can sleep while being concentrated in the heart, one can play being concentrated in the heart, and one can do everything while being concentrated in the heart. It's just a question of practice. And after some time, it becomes very normal, natural, and everything. But if it is difficult, then before doing any activity, at least concentrate in the heart on the mother's presence. Before undertaking, before eating food, before going to sleep, before speaking, before eating, before playing, before going out for a walk, before going for a movie for that matter, offer it, concentrate in the heart and offer it to the mother's presence. And then because that also becomes difficult, so set aside some time in the day. Maybe there is a nice line of Tulsidas, एक घड़ी या दो घड़ी आधों में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध. सो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम अपने हिसाब से कि even if 10 minutes, agreed that in 10 minutes the actual concentration will be initially few seconds. But if we fix a time that this is the time I will sit and concentrate on the mother's presence, then slowly we will find that ras aane lagta hai. The whole process becomes a joyous process. We begin to look forward towards it. So 10 minutes, 20 minutes, half an hour. Generally, it's not for very long period because that's a different kind of yoga. So say half an hour, 3 times a day, TDS is a good idea. Start with 10 minutes, go to 20. Even if we can do that to begin with and fix a time and place, is very good because then the whole atmosphere and everything within is attuned to that. And it's me time with God. It's my time with mother. And people often say, I couldn't get because this happened, that happened. Well, very simple. Unless you are engaged in doing mother's work and there is a change going on, if you are traveling, etc., it's different. Otherwise, everything else can wait. Imagine if mother has called us at a particular time. What will I say? Mother, I am not coming now because I have to go with a friend to have breakfast. Will I say that? She will not say anything. But I have missed my opportunity. So fix a time. Convenient time. There is nothing like Brahma Muhurt, all the tips. One can do so, it's fine. But any time which is convenient, when one will not be too much into ye bhi karna hai, wo bhi karna hai, spend some time. 15-20 minutes with mother, morning, afternoon, night. And then, in between, call her name. Whenever there is few moments in the office, while sitting quietly, just ma, ma, ma. When getting bored, people are chatting. They are chatting and chattering. World loves to talk. They may speak about all kinds of things. Quietly stay concentrated and do ma, 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 ma. So beautiful. Then slowly we will see that the Divine Mother's presence will begin to develop, grow in us. We will become more and more conscious. And then we will ourselves know that there are certain activities, certain situations, even certain people where this wailing takes place. And we have to be careful. So it's like being watchful. So remove that. Try not to get into that. Like arguments, debates, discussions.
it's best not to get into it because it veils the presence. So, an inner quietude, inner peace is very important in this yoga as a foundation. How to get inner peace? Ask for it. Shanti, 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 Shanti. Just make sure that if you call aloud, there is nobody with the name of Shanti in your house. Every time you call Shanti, Haji Saab, kya karna hai? Peace, 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 peace in the mind, peace in the thoughts, peace in the throat, peace in the heart, peace in the feelings, peace in the body, peace in the brain, peace in every cell of the body. Initially, you are like a madman. But a time comes when we have to just step back for a moment. Whatever be the disturbance, things will happen. Then just step back and peace, peace, peace. And peace will be there. It becomes a friend. So, just simply calling peace. So, this is just to lay a background. And as we move in that direction, as we become aware of the mother's presence, we start getting a kind of inner guidance. So, what is the inner guidance? We have to choose something. Don't put all these preferences. फायदा किस में होगा? ये वाला जॉब लेने से इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा नहीं. Just be quiet and get in contact with her. You will feel a very subtle indication. This is the direction you should go. She's not like, do this, thou shalt not do this. No. वो पुराने वाले भगवान थे. Just एक आपको indication मिलेगा. If you do it, wonderful. And it's not that it will bring you success or failure. It will take you closer on the path of yoga. And if you don't follow, then she'll let you go. You will discover that this was not the thing that I should have done in the light of the yoga. But don't get into guilt. Don't get into feeling sad or bad. Just keep calling her. She is our constant guide. She will take us through a new route. Doesn't matter. She is not like, oh my God, this fellow has done this, now I condemn him. Nothing. She never condemns, never judges. She takes us according to our nature and leads us through everything. So this is a basic practice. After some time, we are in touch with her, we receive the guidance, and life becomes beautiful. Many yogis will stop here. What else is required? One man's perfection still can save the world. That's the Savitri. But we should not stop there because the yoga goes much further. Then there is also the divine in this creation. Whole creation is in the divine. So for that we can start expanding, obviously with the mind imagination to start with. Conceive of beyond this space what is there, like a subtle ether, weaving the texture of space. Stars moving into the vastness where we do not know. So this is another kind of meditation, that all this is in the divine. I am in the divine, this creation is bathed in the divine, charged by the divine. So when we look at trees, when we look at people, just take it that they are surrounded by this enormous light, peace, grace. Here they are not aware. Don't get into that play, but into this greater truth. Initially it will be a conception, understood. It will be an idea, maybe an imagination. But as we begin to dwell upon it, slowly it also will become very easy. Wherever we go, maybe sometime we go to a place we don't like the surrounding, we don't like the people, but automatically that it is the Divine Mother who is covering all this. So it will make a huge difference. Any zone, in the most terrible war zone if you go, but take it that all this is in her. Tremendous. It's a great power. This will open us to cosmic consciousness. I'm not going into all these. This opens the door to the psychic realization. And with the psychic realization comes a growth of bhakti, devotion, surrender,
urge for progress, enthusiasm, gratitude, all this will come. Inner peace and joy, they will be the results. And as we begin to live into this larger, vaster consciousness, there will be wideness. So, wideness is a big buffer against many things in life. We get troubled by small things. ये क्या हुआ, ये क्या होगा? It will automatically act like a great cushion. It will automatically give a direction to the world play. It starts getting revealed to us. Otherwise we get worried. क्या होगा इंडो पाक वार में? क्या होगा उसमें? So we will begin to see the play as it is unfolding in the creation. And along with that, all this is the divine. What does it mean? It means that everything is eventually moving towards a grand divine event through the divinity. It's expressing divinity halfway through. One day it will express divinity in its fullness. It takes away complete worries. You have a child has a problem. I mean, by you I mean, or you're married, there is a problem. Now when you begin to see all this is the divine, very powerful. Doesn't mean it's static. It will move towards more and more revelation of the divine. That everything has a divine destiny. It is the divine who has become all this, and the divine who is taking everything towards his own finality. So all this dvesh, these worries, they go away. Child is not studying, child is not married, this, that. I'm taking one example of my own future, क्या होगा? जिसने बनाया है ये, वही आगे भी ले जा रहा है. मुझे क्या करना है? ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है, सरेंडर करना है. इट रिक्वायर्स ए एक्ट ऑफ faith and great courage. Yoga requires faith. And if there is no faith, we can ask. ये भी provision है, option है. अगर आपके पास faith है तो कृपया बटन 1 दबाएं. और अगर faith कम है तो 2 दबाएं. faith बहुत कम है 3 दबाएं, नहीं है तो 4 दबाएं. 4 दबाएं तो फिर ये होगा, क्या चाहिए? faith चाहिए. देंगे भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्हीं से तो आता है सब, और कौन देगा? वही देंगे. हम लोग उनसे गलत चीजें मांगते रहते, बेकार की चीजें. भगवान आज वो रसगुल्ला मिल जाए, भगवान वो वाली जो गुलाब जामुन उसके पास है ना, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है. ऐसी मूर्खता वाली चीजें मांगते रहते. भगवान कहते हैं ओके, देता हूं तुझे वही गुलाब जामुन. आप खाने के बाद बोलेंगे तो बहुत कड़वी है, आपने क्यों दी मुझे? लालच तो तुझे आ रहा था, है ना? तो ये अब हम, सच बात है कि दाता तो वही है, लेकिन हम मांगते क्या हैं? हम इंस्टेड ऑफ आस्किंग वो वाली गुलाब जामुन, अगर कहते भगवान वो गुलाब जामुन खा के जो मिठास और जॉय आएगा वो मुझे दे दो, तो वो दे देंगे. स्वीटनेस ऑफ द डिवाइन. सो बेसिकली ये ट्रिपल वे में हमको डिवाइन को रियलाइज करना है. ये बहुत कठिन नहीं है, एक्चुअली बहुत सरल है. ओके, ये क्या बात है? सरल इसलिए क्योंकि यही हमारे सबसे करीब है. हमारी सांसों से ज्यादा करीब डिवाइन है. कठिनाई क्या है? भाई हमने तो ये सुना है बहुत ऊपर है. ठीक है, द्रौपदी की वो कहानी है ना, अगेन ओरिजिनल महाभारत में नहीं है, स्वाइमस से, कि जब चीरहरण हो रहा है तो कैसे कैसे वो पुकारती है. ओरिजिनल महाभारत में चीरहरण का एपिसोड नहीं है, द्रौपदी के चीरहरण का, व्यास ऋषि की. तो वो बुला रही हैं अलग अलग नाम से, भगवान नहीं आ रहे थी. अंत में वो बोलती है, हे मेरे हृदय में निवास करने वाले प्रभु कृष्ण, और प्रकट हो जाते हैं. कहती है अब तक आप नहीं आए. कहते हाँ, तू सारे अपने 5 पतियों पर रिलाई कर रही थी, ये करेंगे कुछ करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो लेड बैक नेचर का हूँ, करने दो इनको भाई, सॉर्ट आउट. फिर तुझे लगा ये भीष्म द्रोण ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये कुछ करेंगे. फिर मैं रुक गया. फिर तो बुलाने लगी, हे द्वारकाधीश, हे ट्रांसेंडेंट, वहाँ निवास करने वाले. मैंने कहा अब इतने दूर से आने में तैयारी लगती है ना थोड़ी. जैसे ही तूने कहा मेरे हृदय कमल में निवास, तो वही तो मैं तो, वो तो एक्टिव है, वो तो ऑलवेज एक्टिव है. सो वी हैव टू टेक इट दैट द डिवाइन इज नियरर देन आवर ब्रेथ.
ये सच है, और क्या कहूँ। सांसों से ज्यादा करीब है, धड़कनों से ज्यादा करीब है। पर ये एहसास, रियलाइजेशन धीरे धीरे होता है। बाकी सब जो करीब है वो दूर हैं, और उनकी करीबी तभी तक है जब तक हम डिवाइन से की करीबी में वो बीच में नहीं आते हैं। तो ये सारी इससे प्रोसेस से जुड़ी हुई है। तो ये एक पार्ट है। पहले को साइकिक रियलाइजेशन, उसके द्वारा भक्ति, सरेंडर, ये सब ग्रो करता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन, द डिवाइन हु इज बियॉन्ड ऑल दिस क्रिएशन, उससे डीप पीस आती है, इक्वानिमिटी आती है, वाइडनेस आती है, नॉलेज आती है, स्ट्रेंथ आती है, लाइट पोर्स इनटू अस। सो ये सब वहाँ ट्रू नॉलेज, मतलब नॉट जस्ट ये, क्योंकि फिर वो अभी हमारा जो मेंटल ब्रेन बॉक्स है वो एक टाइम पर खुल जाता है। कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन भगवान की वो इंजीनियरिंग है, या तो तोड़ देंगे या फोड़ देंगे। नारियल फूटेगा, इसको बोलते हैं ना कपाल फोड़ साधना, होती है एक्चुअली, अग्नि इधर से निकलती है। तो वो जब फूट जाएगा तो आपको जो चीज के बारे में हो, दैट नॉलेज विल पोर इन रेडिएंट स्ट्रीम्स। इसी को बोलते हैं ना गंगे चे यमुने चे सरस्वती चे। जब स्नान करते थे बचपन में, अभी पता नहीं कोई करता है कि नहीं, लोटा लेके गंगे चे, गंगा भी आ जाओ, सरस्वती, यमुना, दे आर स्ट्रीम्स ऑफ डिवाइन पावर एंड नॉलेज विच बिगिंस टू पोर इन टू द साधक, एंड दैट बिगिंस टू चेंज अवर नेचर। A new knowledge, a new power, a new opening to knowledge, to joy, जिसके बारे में हमको कभी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है जॉय। हम तो सोचते पार्टी जाके ही जॉय होता है, दोस्तों से बात करके। इस तो उल्टा हो गया, पार्टी जाने का मन नहीं करता क्योंकि वो जॉय में इंटरफियर करने लगता है। दोस्त आते हैं तो लगता है कब जाएंगे, सॉरी, क्योंकि वो यू आर इन दैट डिलाइट, नो। सो ऑफकोर्स इट्स वर्क। सो कहने का मतलब ये कि बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इट फ्रॉम अबव, और वो हमारे माइंड, हार्ट, लाइफ को शेप करने लगती है, बिकॉज डिवाइन मदर्स एनर्जी। इसमें कुंडलिनी जो खुलती है ऊपर से नीचे की ओर खुलती है। जैसे ये ऊपर से डिवाइन मदर की शक्ति पोर करती है तो माइंड खुल जाता है। वो हम सावित्री से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो माइंड खुलता है तो क्या होता है? इमॉर्टल्स थॉट्स रिप्लेस्ड अर्थ्स ड्रैब डल सेंस। देखिए क्या बातें होती है जब लोग आपस में मिलते हैं। और तेरा हाल सुना, ये हमारा तो सब ठीक ही चल रहा है, अब बस बेटे का पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी मिल गई, बड़ी अच्छी नौकरी है, और शादी वादी हो रही है, हाँ बहू देख रहे हैं हम, लड़की मिली है, बहुत अच्छा है। यही चलता रहता है। उसके बाद बंद नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होता है, अच्छा बच्चा कब हो रहा है? अरे यार छोड़ दो यार उनको, बच्चा उनको चाहिए नहीं चाहिए, तुम होते कौन हो उनकी लाइफ के सारे बच्चे तक। होता है ना ये डिस्कशन। उसके बाद ये भी हो जाता है कि अरे बाजार में ताजी गाजर आई हुई है, बहुत अच्छी। सच में मटर का भाव गिर गया, अरे फिर अब मैं बता दूंगी उनको कि वो 10 किलो ले आए, भाव गिरा है। क्या है मतलब? आज गर्मी बहुत है, 5 घंटे की पावर कट, ये तो क्या हो गया है म्युनिसिपैलिटी वालों को। अब उस पर एक डिस्कशन चलता है, करते करते शाम हो जाती है, फिर बस जिंदगी तमाम हो जाती है। रोज सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उसकी जगह आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो हायर नॉलेज विल बिगिन टू एंटर, बट माइंड हैज टू बी वाइड। अदरवाइज माइंड जब आएगी और हमारे अंदर ऑलरेडी पुराने फॉर्मेशन है, तो जब उतर रही है नॉलेज तो हम कहें एक मिनट, द्वैतवाद उतर रहा है कि अद्वैतवाद उतर रहा है? भगवान कहेंगे अभी मैं तोड़ता हूं तेरे सारी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, तू मुझे भी सिस्टम बना रहा है। डिवाइन इज बियॉन्ड ऑल स्कूल्स एंड सिस्टम्स, ही इज इन्फिनिट। यू कैन कैप्चर हिम इन एनी वे ऑफ लाइफ, मोड ऑफ थॉट। तो वन हैज टू बिकम वाइड, क्वाइट। अगर बहुत ज़्यादा माइंड में उथल पुथल चल रही है तो नहीं वो नॉलेज आ पाएगी। तो ये पैरेलल मूवमेंट चलता है। एज द नॉलेज डिसेंड्स द चेंज बिगिंस,
एंड देन इवेंचुअली द नेक्स्ट प्रोसेस इज द सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये सारे स्ट्रैंड्स उसमें जाके जुड़ जाते हैं एंड दैट पावर बिगिंस टू चेंज अस. उसी में ये सारे एक्सपीरियंसेस नाना प्रकार के, इट्स बेस्ट नॉट टू थिंक अबाउट देम, टॉक अबाउट देम. क्योंकि जब हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, तो माइंड बहुत बड़ा फॉर्मेटिव एजेंट है. ओरिजिनल जो इमिटेशन एक्सपर्ट है वो माइंड है और वाइटल है. ये फैब्रिकेट करने लगते हैं. वो आपको ऐसे फॉर्म दिखा देंगे और आपको लगे अरे हमने तो भगवान मिल गए. बहुत से साधु संतों में भी ऐसे मिलेंगे आपको. मूवमेंट बन जाता है बिकॉज द माइंड क्रिएट्स अ, माइंड इज वेरी फॉर्मेटिव, वाइटल, वेरी फॉर्मेटिव. सजेशन आएगा, तुम अवतार हो. बस आई हैड ए पर्सन, मेरे पास लेके आए उनके बेटे, तो बोले कि इनको आप ठीक करें. मैंने कहा क्या ठीक करूं? बोलते ही किसी के सुनते ही नहीं हैं. तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है, छोड़ दो उनको उनके ऊपर. नहीं नहीं आप थोड़ा बात कीजिए. तो मैंने बात किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनकी समस्या क्या है. उन्होंने तो क्या कहा, बोलते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ. अब बात तो सही कह रहे हैं सभी सुप्रीम है. मैंने कहा हाँ लेकिन वो भी तो सुप्रीम है ना. नहीं, मैं ही एकमात्र सुप्रीम हूँ. बस मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ करना. अब ऐसे एक्सपीरियंस लेके बहुत से लोग जाके दे सिट. दैट एक्सपीरियंस इज वर्थलेस फॉर एवरीथिंग एल्स. ना अंदर में पीस आ रही है ना कुछ हो रहा है, बट वो मैं सुप्रीम हूँ. आप क्योंकि नेचर जो लोअर नेचर है ना फैब्रिकेट करता है. वाइटल नेचर, यू आर ए ग्रेट इंस्ट्रूमेंट. और लोग भी होते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले. अरे पांडे जी आप तो, पांडे जी का अगर मन सटक गया पांडे जी को मत याद दिलाओ कि वो पांडे जी है नहीं, वन हैज टू बी सो केयरफुल. मन में सजेशंस अगर आएंगे और आसपास, सो हैव टू बी क्लियर, यू आर नथिंग, गॉड अलोन इज ऑल. सो ये सारी इसमें गुथी हुई हैं. इनकी कोई टेक्निक ऐसे नहीं है, बट दे विल कम. यू हैव टू बी विजिलेंट एंड सिंसियर. माँ कहती इफ यू आर नॉट सिंसियर डोंट टेक अप योगा. सिंसियर मीन्स कि नॉट टू बी कैरिड अवे बाय ऑल दीज थिंग्स. ये केवल लोग नहीं कहेंगे, अपने अंदर सजेशन आएंगे. दैट वन इज ग्रेट, अदर इज लो. बहुत तरह के सजेशन आ सकते हैं. ह्यूमिलिटी सेव्स अस फ्रॉम. सो साइमल्टेनियसली ये क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज जो कल्टीवेट करनी पड़ती है. एटीट्यूड्स कल्टीवेट करने पड़ते हैं. तो ये सारा चीज एक साथ चलती है. कई भूमि पर ये चल रहा है, पर ये तो थोड़ा बहुत विशाल हो गया. तो मुख्यतः जो एफर्ट है ये तो हुआ एक इनर एफर्ट, रियलाइजिंग द डिवाइन and with the divine energies, divine power, as it is descending, there is a little change that goes on. But divine power जब हमारे अंदर आ रही है, अगर हम prepared नहीं हैं तो हमारी हालत बुरी होने वाली है. ऐसे लोग हैं, कुछ एक हैं. इसलिए माँ कहती है यू हैव टू प्रिपेयर एट द अदर एंड. तो अदर एंड में क्या करना होता है? 4 तरह की तपस्या है इस योग में. उसको माँ बताती चतुर्विध तपस्या. 4 पार्ट्स हैं और उन चारों की तपस्या है. मन की तपस्या, हृदय की तपस्या, प्राण की तपस्या और शरीर की तपस्या. तो तपस्या क्या होती है? मूल सेंस तपस्या इज अबाउट कंसेंट्रेटिंग द एनर्जीज ऑफ एनी पार्ट, एनी मूवमेंट, एंड offering them to the divine for the divine will to work and change it. And the results of each of the tapasya, she also describes, tapasya of the body leads to beauty and harmony in the physical. Tapasya of the life leads to growth of power in the being. Tapasya of heart leads to growth of true love and sweetness and joy. And tapasya of the mind leads to true knowledge, finding space in the human system. क्योंकि मैनिफेस्ट करना है ना, इसलिए. तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रत्येक तपस्या का we'll just read just a few sentences here and there. And it's not like we have to do it separately. हाँ, so 4 tapasyas are tapasya of the body, tapasya of the life, tapasya of the heart, tapasya of the mind.
Or we can equally say tapasya of beauty, which belongs to the body, tapasya of power, which belongs to the life force, life energy, tapasya of love, which belongs to the heart, and tapasya of knowledge, which belongs to the mind. So I'll just read few passages from here and there with regard to the body. Very simple. What are the things which are part of the tapasya of the body? Food, sleep, sexuality is connected with it, use of things like drugs, alcohol, smoking, etc., and work, exercise, rest. This is what is part of the tapasya of the body. And one simple practice is for food and sleep, balance and moderation. Fasting, excesses, I will not eat for 2 days, that disturbs the play of prana inside. That may be all right for one kind of yoga. But in this yoga, very simple rule is take as much as you can eat as much as you can digest. So there is no fixed rule. And there is nothing like, I'll be a pure, strict vegetarian. It will drop off when it will drop off. That's not the issue. It will happen automatically. If you are not, when the consciousness begins to change from the body, many things drop off. One of them is non-vegetarian diet. Not that if you are taking, you have to start feeling guilty and start fighting. But it should be in moderation. It should not be greed. आज ये मिला, इसको मैं खाते चला जाऊंगा, पता नहीं 10 दिन बाद मिले नहीं मिले. So one has to eat in moderation. Even the best things should be done in moderation. That's the whole idea. And sleep, 7 hours, good night sleep in a ventilated room, maybe half an hour in the afternoon is a good idea. 6 is minimum, don't go below it. 8 is probably going to the higher side, so 7 hours of sleep, preferably 10 to 5 or 10:30 to 5:30. I'm just making it, breaking it down to the minimum essential. Food, 3 times a day, small amounts or whatever amount you need. Not too much, not too less. And then comes something known as sexuality. Sexual activity is intimately connected with our biological stuff. The problem with sexual energy is that in sexual act, it gives pleasure, it gives, it's a very creative force, it gives rise to a, child. But it has 2 aspects, the sexual seed. One is the biological aspect which transmits seeds of heredity, and the other thing which within it is a force through which things are transmitted. So sexual activity leads to the loss of this energy, and this energy loss means it goes into the creation of a child or in having pleasure. But if we conserve this energy begins to change. This ritas or the sexual fluid changes into tejas. Tejas is heat, and it's actually we can experience it. बोलते हैं ना, बहुत आग जैसी लगने लगती है. Then if we conserve it, this tejas changes into ojas. Ojas is the electrical energy in the mind. The mind becomes very active, very, इसको बोला जाए brilliance, intelligent in the true sense. And if you conserve this ojas also, then it becomes Various, which is pure spiritual energy. This is very rare, but some people can do it. Spiritual energy, and that energy can have very tremendous effects. So we have the conservation of energy or sexual act, but we don't have to do it with the idea of guilt and, okay, from tomorrow I'll not do any sexual act. It doesn't work like that. So there is a process for it, and the process is first sanyama. Not straight away nigraha, because nigraha is likely to lead to all kinds of deviant ways. And especially not to boast and not to, I have conquered it. No. So one has to practice sanyama, regulate it, offer it to the mother, pray for her help, ask for divine grace, do a lot of exercise, stay busy, don't watch useless things, don't get into states of boredom. Boredom is where sexual energies become overactive. And therefore, have healthy joys so that you don't have to resort to this kind of pleasure. And then eventually, it will start. At some point, it becomes very weak and drops off.
What about husband and wife, their personal pleasure? Well, if both are in sync with each other, physical embrace, physical intimacy need not involve the sexual act. That's what I'm saying. We must learn to differentiate between the two. Sexual act, as it is understood today, is still its original purpose is biological reproduction. But husband and wife, anybody, see, there is a way of expressing physical intimacy without necessarily involving it. Something which is refined, not crude, something which can be almost like, more like waves merging into each other. So, this enough of all discussion of sexual activity. Then the other part is, apart from this, exercise, work, and rest. So, work, if it is too much, if it leads to fatigue, not only our body, our vital and the mind, all of them need rest. The brain needs rest. The vital energy needs rest to recuperate itself. So how to get rest? Sleep is one part, but we can't be sleeping every time. Stay quiet, bring peace. Peace and quietude calms the nerves. Stay quiet. Don't rush, jump at every activity. And do everything as mother's service. So all this automatically opens our system to higher and higher forces. So this is about tapasya of the body. It leads to building of a more harmonious, beautiful body. Then tapasya of power. Here there is a role of senses. So senses are one of the ways we take in lot of energy through the senses. So refinement of the senses, what kind of music we hear, what kind of things we see, images we see, all of this has a role to play. So senses are very important. Equally, the life energy, instead of letting it go here and there in the pursuit of desires, the life energy should be turned towards service of the divine. We don't realize how much energy is lost and wasted in pursuit of desires. And many things we don't even take it as a desire. We take it as a thing. एक शर्ट देखी अमेजोन पर खरीद ली. अरे कितनी शर्ट चाहिए भाई? वार्डरोब भरना है क्या? हम नीड बोल के करते रहते हैं. 1 दर्जन जूते आ गए. हमारी जरूरत है जी, यहाँ जाते हैं तो ये पहनते हैं, वहां जाते हैं तो ये पहनते हैं. आ रहा है तो ठीक है, बट डोंट गो इन परस्यूट ऑफ डिजायर. इट्स नॉट दैट यू हैव टू शन थिंग्स. When they come, receive it as coming from her. But if they are not there, should be happy. Matlab, mind should not be occupied. The life energy should not be directed towards this goal. So desire and divine don't go together. As simple as that. So, but it becomes very difficult. So start with consecrating the desire to the divine. I want to buy a shirt. Mother, I want to buy a shirt. I am offering this to you. I am buying it, but I am remembering you. And then you can pray. ये attachment हटा दो, पर जाके खरीद लो. I mean, that's how it starts. Mother, I want to make a house. Let this house become your temple. They are all desires. But keep consecrating these desires to the Divine Mother. Don't divide life. So slowly, when the Divine gets connected to your desires, what does he do? He starts first eating away the joy out of the desire. वही होता है लोगों का. रसगुल्ला रसगुल्ला, भगवान भी जुड़ गए. आपके रसगुल्ला खाने के पहले भगवान ने खा लिया. आप करो, आप रसगुल्ला था या सामने पड़ा, आप खा नहीं सकते हो. There is a nice interesting story of real story, हाँ, कि लोग कई बार कुछ बनाते थे तो श्री अरविंदो के पास भेज देते थे कि वो चख लेंगे. श्री अरविंदो वुड नॉट हार्डली ही वुड ईट एनीथिंग. सो एक चखलिया प्रसाद बन के आ गया. तो एक बार कुछ दोस्तों ने चोरी किया कटहल. पौंडीचेरी में बड़ी मुश्किल से चोरी किया कटहल, और कटहल और पूरी बनाई. आज तो फीस्ट होने वाली है. और फिर उन्होंने भेज दिया श्री अरविंद के पास कि पता है अब वो चख के आ जाएगी, अब ये तो इट्स अ डिलाइट. तो वेट कर रहे हैं. इस बार डब्बा थोड़े देर से आया, झट से नहीं आ गया. आया तो वेट कर रहे, देखा डब्बा पूरा खाली. पूछा व्हाट हैपेंड? Shobindu ate all of it. No, he took one core.
फिर बाकी फिर उन्होंने हम सबको दे दिया। डिवाइन का तरीका है, रसगुल्ला आपके पास आएगा, खाएगा कोई और। तो ये देयर आर मेनी वेज, डिवाइन हैज ऑलवेज। सो इफ यू कॉन्सेक्रेट, वन डे ही विल रिमूव फ्रॉम योर दिस रसगुल्ला ईटिंग टेंडेंसी। वो ईशुपनिषद में तो कहा है ना, तेन त्यक्ते न भुंजिता माँ हृदय कस्य स्विद्धनम, कैसे प्रैक्टिस करें ये माँ बता रही है। तो दिस इज हाउ स्लोली द डिजायर्ड सेल्फ एज इट सिंक्स, आफ्टर सम टाइम वन विल नो द डिफरेंस कि यार ये डिजायर में की हुई चीज ये तो नहीं मिलेगी। भगवान के साथ ये दो संबंध हैं। एक है शुरू में जो डिजायर करो दे देते हैं, मतलब इस हद तक चला जाता है कि आपका मन किया अरे आज आश्रम में आ गए पौंडीचेरी में, छोले अगर मिल जाते तो उस दिन डाइनिंग रूम पता चला छोले ही बन गए, लोग बड़े खुश होते हैं। टुडे यू नो, ऐसे रुक जाओ, थोड़े दिनों बाद करेला मिलेगा। आई मेड अ पैक्ट वन डे, आई से अरे वॉट एवर मदर गिव्स मी आई विल ईट। ओके, डाइनिंग रूम में उसी दिन करेला, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा करेला। मैंने कहा ये कैसे कह दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही नो है, वो है करेला। ये करेला मैं कैसे खाऊं? मैंने कहा ये मेरी तपस्या हो गई, साधना हो गई। मदर दिस इज नॉट फेयर, बट माँ ने दिया है, खा ही लिया, उस दिन तो खा लिया मैंने। अब क्या करें, माँ खेल रही है तो फिर। सो डिवाइन विल, a time comes in the life of yoga, and everybody who advances a point realizes it. Whatever you desire, you will be denied it. But all that you need and much more than that you will get in abundance. There is a nice line in Savitri, heaven's wiser love rejects the mortal's prayer. अगर ये होने लगे कि डिजायर कर रहे हो नहीं मिल रहा है, कहना भगवान बड़े प्रसन्न है मेरे ऊपर। अब ग्रेजुएशन हो गया, अर्थार्थी भक्त से जिज्ञासु भक्त, आपके पास चॉइस ही नहीं छोड़ेंगे। इफ यू डिजायर समथिंग एंड द डिवाइन थॉट्स इट, दैट मीन्स ही लव्स अस लाइक एनीथिंग। दिस इज तपस्या ऑफ पावर इन शॉर्ट। कॉन्सेक्रेट द डिजायर टू द डिवाइन, डू निष्काम कर्मा, do the work very well, but leave the results in the hands of the Divine Mother. She will do what she wants to. If she gives something, maybe much more than what you ever imagined, take it as a prasad. If she doesn't give that, anyways, she has accepted your labor. It's a very beautiful little thing in Synthesis of Yoga, which I have really loved and enjoyed. Sri Aurobindo says, even when you give a gift to someone, or when you receive a gift from someone, you take it that it is not the person to whom you are giving, but to the divine. And vice versa. ये बहुत अच्छी चीज है। एक तो है कि when you receive from someone, you are not under obligation. In India भी समझना, पैसों का हिसाब जो लिया है जो वैसे ही देना है, कितना बड़ा डब्बा था, कितने रुपए का गिफ्ट होगा, हम लिफाफा पकड़ा लेंगे, अरे यार इतना हिसाब किताब क्यों कर रहे हो? हमारे अकाउंट लेजर में केवल एक ही वर्ड लिखा होना चाहिए, नंबर 1, सारा एक, या दूसरा जो गुरु नानक जी का तरीका था, 13 मतलब 13, जो मिला वो 13 तूने दिया, भूल जाओ कहां से आया, किसी से, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीबॉडी, बट ऑफ कोर्स you remember as gratitude, but you are not obliged. There is a difference between being obliged, that I have to give back this. Dusra, when you are giving, Sri Aurobindo says, even if the immediate recipient does not receive it or rejects it, but the divine has received it. ये कितनी अच्छी बात है। लोग ये डिस्कस करते हैं, ये दूंगा लेकिन ये पता नहीं उसको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, वहाँ तक ठीक है, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे भाई तुम इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हो, वो क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको वो चीज़ अच्छी लगी है, अंदर से इंस्पिरेशन आई है ना, गिव इट। इवन इफ इट डज नॉट, द डिवाइन हैज रिसीव्ड योर गिफ्ट। सो बेसिकली इन एवरीथिंग, एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ, टर्न इट इनटू अ डिवाइन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑफ द डिवाइन विद द डिवाइन। मिले तो खुश, ना मिले तो भी खुश, करना फकीरी फिर क्या दिल लगीरी, सदा मगन में रहना जी,
भूमि पे सोना पड़ा, बहुत अच्छा। डनलप पिलो पे, डनलप पता नहीं आउटडेटेड हो गया होगा भी क्या, हाँ, मेमोरी फोम या वाटर बेड। वाटर बेड मुझे पता है, मैं एक बार सो चुका हूँ, नींद ही नहीं आई। मैं तो इधर से उधर ही बैलेंस करता रहा। वो पता चला रात को लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि वो घूम फिर के। सो एनीवेज पॉइंट इज की टेक जॉय इन दैट, डोंट गेट अटैच्ड कि अरे अरे वो देखा था मुझे घर में खरीदना है, नहीं, इट्स कूल, इट्स ओके। जहां गए उसमें आप जॉय ले रहे हो। जमीन पर सोना पड़ा, वो भी जॉय है। पंखा है, अच्छी बात है, नहीं है ठीक है, एसी, मतलब दैट इज द तपस्या ऑफ पावर, दैट्स हाउ द डिवाइन पावर बिगिंस टू वर्क इन अस। Otherwise, all the life energy goes into pursuit of useless things. And then to use this life energy for the Divine Mother's use. Service of the Divine, work for the Divine is the best way to purify the life energy. Then refine it in many ways. We have talked about it. Very important in refining. Every act should be refined act, not a crude act. Feelings should be refined, etc. This way. Then, tapasya of knowledge. Love I'll take in the end. Tapasya of knowledge, basically, we see how many things we have kept in our mind like cobwebs. So we have to learn to make the mind quiet. Knowledge does not come by reading many books. Reading books can prepare the mind, make it wide, make it little more supple, especially Sri Aurobindo's books. Sri Aurobindo's books will make the mind wide by its very, because its substance is like that. So mind becomes wide, it becomes supple, it becomes ready to receive the light, and it makes the mind quiet. बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है श्री अरविंदो को पढ़ के। कुछ लोग ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। बट बेसिकली इट ब्रिंग्स क्वाइट्यूड इन द माइंड. So tapasya of the mind. Similarly in speech. Speech is very intimately connected with the mind. So one should not use speech to throw it off, especially in gossips, rumor. A और B जहाँ बैठ गए C की बुराई कर रहे हैं, C और B बैठ के A की बुराई कर रहे हैं, C और A मिल के B की बुराई कर रहे हैं. ये क्या है? मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है. स्पीच शुड बी यूज्ड फॉर द डिवाइन वर्क. सो anger, expressing anger in speech, expressing all those, excitement in speech is not healthy because it has an influence on the mind. So, conserving speech. Speak when it is needed to speak to create goodwill, beauty in the world. Don't say things like, बीमार लग रहे हो आजकल, क्या बात है? अरे यार, छोड़ दो उसको, शांति से रहने दो. चेहरे पे क्या हो गया? ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए नया नया शादी हुई थी और हमारे पार्टी हुई एयरफोर्स का. तो हमारे एयर मार्शल साहब की वाइफ थी और मुझे मेरे फादर इन लॉ भी एयरफोर्स में. उन्होंने कहा, यू आर ए डॉक्टर, एवरीबडी यू आर ए बिग मैन, यू शुड गो इंटरैक्ट. मेरा कोई इंटरैक्ट करने मन नहीं करता. यू शुड इंटरैक्ट. तो मैंने कहा क्या इंटरैक्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा है. तो मैं गया इंटरैक्ट करने. सीधा एयर मार्शल जी की वाइफ थी, उनसे इंटरैक्ट करने लगा. और जाके मैंने पहले यही बोला कि मैडम आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा क्यों? आप डॉक्टर को जो अपने ही काम आता था और कुछ इंटरेक्शन आता नहीं था. मैंने कहा नहीं, आपके आंखों के नीचे कुछ सूजन लग रही है. अब मैंने आगे ये भी बता दिया कि आप कल आ जाना, मैं आपका यूरिन टेस्ट करवा लूँगा. मेरी वाइफ मुझे नच किए जा रही है इधर से और कुछ कह रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है. फिर मैं पीछे मुड़ के हैं तो जब हो गया पूरा कांड तो वो बोलती है वो मैस्करा है. मैंने कहा ये क्या होता है मैस्करा? मैस्करा मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे क्या समझ आया मैस्करा क्या होता है? अरे वो सूजन नहीं है, वो मैस्करा है. मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है, कुछ होता है. आज तक मुझे नहीं पता मैस्करा क्या होता है. पर एनीवेज द पॉइंट इज कि क्या है. अच्छी मैं यही बोल देता, मैडम यू आर लुकिंग वेरी यंग. झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं है, पर कोई ना कोई गुण तो होते ही ना किसी में. गुण ही अप्रिशिएट कर दो. कोई ना कोई में तो कुछ गुण होते ही है ना, ढूंढोगे तो मिल जाएगा. अरे आपकी स्माइल कितनी अच्छी है. अब स्माइल तो न्यूट्रल चीज है ना, पूरे बच्चे से लेके बूढ़े की स्माइल. आपका दिन बन गया.
आपका नाम बहुत अच्छा है. कभी कभी मैं देखता हूँ ना, नाम कितने सुंदर होते हैं लोगों के. नाम से ही वो कहते हैं घंटियां बजती हैं. नाम अच्छा है. कुछ नहीं, समथिंग और जस्ट समथिंग ब्यूटिफुल, प्लेजेंट. वी डोंट हैव टू टेल लाइज और फ्लैटर, बट इक्वली हार्मिंग, हर्टिंग, ऑल दिस स्पीच से harangues, then innuendos, that's not good. So ये एक पार्ट है जो माँ बताती हैं, तपस्या ऑफ स्पीच. एंड देन फाइनली कम्स दी, इससे माइंड के तपस्या में ही है टू बी एबल टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ थिंग्स, different perspectives, and then find their integration. All this is part of the tapasya of knowledge. And finally, the tapasya of love. So, tapasya of love की 4 सीढ़ियां हैं. पहला है, वे लोग जो रोने ही रोते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता. अरे यार, माँ बाप ने भी प्यार किया है तुझे, कितने लोगों ने प्यार किया होगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता. किसी ने तो किया होगा. गाने बने उस पर सेलिब्रेट करने वाले, पता नहीं कौन कौन से, एक समय होते मुकेश के गाने. फिर उसके बाद वो था ना बड़ा बुरा, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए. अरे चाहते क्यों थे तुम? प्यार की आदत तुम क्यों चाहते थे? प्यार में देना सीखो. अब ये होता है कि प्रेम का जो सबसे निम्न स्तर है इज आई विल गिव लव ओनली इफ समबडी गिव्स मी लव. नहीं, उससे भी नीचे, आई जस्ट वॉन्ट लव, एवरीबडी शुड लव मी. अरे भाई, तूने किसी को प्यार किया है? गाने वाला नहीं बोल रहा हूं, ऐसे. गाना भी इस पर, तुमने किसी से प्यार किया, ये कोई क्वेश्चन है? तो हमें प्यार करें लोग, क्यों करें? पर ये जो सबसे लोअर स्टेज है, उसकी सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेम होता है जहां पे आप या तो डिपेंडेंसी या डिवोरिंग, ये खाने का जो, ये प्यार का जो सबसे निम्न स्तर है. बच्चा क्या सीखता है सबसे पहले? टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द मदर. मदर इज फॉर द चाइल्ड फीडिंग. तो वो खाने को प्यार से, हम लोग इंडिया में भी बहुत जोड़ते हैं खाने को प्यार से. घर में गए नहीं कि जी कोका कोला चाहिए, नहीं जी ये चाहिए. अब तो शायद कम हो गया होगा थैंक्स टू, पर पहले तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी. घर में गए नहीं है, हाँ आप खातिरदारी करो, लेकिन सीधा कोका कोला. अरे पूछ तो लो क्या चाहिए, नहीं चाहिए, पानी ही रख दो. तो खाने से आप कहीं जाओ, खाने से लगता है कि वो प्यार बड़ा अच्छा है. अब यहां तक ठीक है व्हेन यू आर गिविंग, बट सम पीपल लाइक टू डिवोर द अदर पर्सन. देयर आर पीपल लाइक दैट हु लव लाइक दैट, दे कॉल इट लव. That's not love. That's feeding away. So there is this lowest kind of love. Even animals don't have that. I mean, Ajgar, python has that kind of love where it just devours, and the animal feels in the last moments, it becomes quiet. It's ready to be devoured. Stockholm syndrome, all this. Then next level, if you love me, I'll love you. हाँ, तो अब होता है ना कि कौन पहले बोलेगा, कौन पहले गुलाब का फूल लेके जाएगा. और पहले पहले में तो कोई तीसरा आ गया. इफ यू लव मी देन आई लव. थर्ड लेवल इज आई विल लव यू, बट सी आई वॉन्ट एक्स वाई जेड. कॉमन ह्यूमन लव इज सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में घूमता रहता है. इफ यू गिव मी लव, आई लव यू, और I will love you provided you give me love. तो ये सब प्यार नहीं है, ये व्यापार है. प्यार और व्यापार में अंतर होता है. तो प्यार क्या होता है? वेर यू गिव. वाई? बिकॉज ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग. बट वेन यू गिव, उसमें भी 2 कैटेगरी हैं. यू वॉन्ट द पर्सन टू एक्नॉलेज. ये केवल माँ इस प्यार को टच कर पाती है, और somebody who is very exalted, या गुरु. दे गिव एंड दे वांट नथिंग, बट एक्नॉलेज करने की कि कम से कम ये तो बोलो, एक मैसेज ही कर दो ना कि यू आर सो नाइस, सो काइंड, समथिंग. बट देन यू ट्रांसेंड दैट एंड यू लव बिकॉज इट्स योर नेचर टू लव. व्हेन द हार्ट रीचेस दिस पॉइंट ऑफ tapasya, where you love because
it's your breath to love. Then the doors open of infinite love and sweetness. Then not only you don't need anybody to love you, then human love becomes such a travesty. कि ये क्या आ गया बीच में, कहां से आ गया? Because you have tasted the असली वाला राजभोग. So human love becomes a travesty. Sounds strange, but that's how it is. So all this way we prepare through divine service, through quietening of the mind, through vastness of the mind. We can ask for wideness, peace and quietude by loving the divine and seeking everything from the divine, not from any human being, but giving love freely to all the creatures, whoever is connected with your life and whatever else is there in this world. And a life of balance and moderation, slowly the mind, life, heart, body begins to become ready to be an instrument. What exercises should we do? Because we talked about it. Asanas, this or that. The mother says, from our experience, we have found that there is no particular set of exercises that you can call yogic. It is the attitude with which you do exercises that makes them yogic. So we may walk and we have this aspiration that the body should be a good, useful instrument. So when we do this way, so both and we are working on one side, discovering the divine within, the divine in all creatures, the divine who is all encompassing, divine who is become all this and is becoming constantly new things. And on the other side, preparing the mind, heart, life and body for the divine use. Most importantly, then we cannot have any personal aim or goal. That's why the beginning is the divine for the sake of the divine. And in all this, the key is surrender to the mother, surrender to the mother, surrender to the mother. Opening to the mother, aspiration for the divine, and surrender to the divine mother. Rejection is obviously part of it. So this is the whole Ruprekha. In a day, all this should be accommodated according to flexibility. There is no fixed rule. Read Mother and Sri Aurobindo, especially Savitri and prayers and meditation. Savitri, Mother has said, if you just read Savitri, it will take you to the greatest realizations of yoga without any guru, without any other help. This is enough. So reading Savitri takes us completely to all the realizations of yoga. Read prayers and meditation. If possible, write it, because the difference is when we read and when we write, then there is a whole channel which is being formed. It's going in, you are expressing outside. And these things should be done in a joy. So all this is a typical routine. Keep a balance, not to overdo anything. Yoga is a happy journey. It's not a journey of strain. It's not with guilt that one practices yoga, because there will be many failures and falls on the way. It's only when you, again, दूसरा एक शेर याद आ गया पढ़ने के पहले. वो शेर है, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, बुज़दिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. भाई इतना बड़ा एम लेके चलोगे तो गिरोगे, कोई बात नहीं. You can tell the mother, oops, I did it again. But don't get into guilt. Guilt is un-yogic. Guilt has nothing to do with yoga, it belongs to the old world. And I would add, old Christian world. So, it happens, one falls, one trips over, get up, wipe the pants and go forward. It's a constant march. So, we read something and then we stop. Randomly this page is opened, so I'll just read random. New creation क्या है? What is new creation? उसका बेसिस जिसकी बात हो रही है, तो उसकी थोड़ा सा वर्णन पढ़ लेंगे. एक हम लोगों ने वो सोचा था ना, वो क्या होता है वो कुंडलिनी जब वो चक्र खुलते हैं. We can read that also, either ways. Public demand. कुंडलिनी वो वाला, चलो. Finding of the soul. So, प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, फिक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि ये तो यही करना है, ऐसे नहीं. सो वील रीड समथिंग फ्रॉम
one kind of experience, when we find the soul, then what happens? Okay. So in this yoga, there is Kundalini also, but it doesn't rise from below upward because it's unsafe. Because first it would, if below upward means first your lower vrittis suddenly open up. So above downwards means first the higher centers are touched, those parts which are ready, they get touched, they open into cosmic vastness and they begin to express the divine harmony. Then slowly, that means the mind, the speech, the heart, the life force, and then the body. Okay. So everywhere, Sri Aurobindo says, a glad uplift and a new working came. Page 529, later on those who want to read it. The immortal's thoughts displaced our bounded view. The immortal's thoughts, earth's drab idea and sense, all things now bore a heavenlier sense. A glad, clear harmony marked their truth's outline, reset the balance and measures of the world. Each shape showed its occult design, unveiled God's meaning in it for which it was made, and the vivid splendor of his artist thought. So whatever we see then, it begins to bear a new significance. We begin to see God's sense in it, in everything. The immortal's will took into its calm control, not a restless or jabardasti wala, calm control, natural, sahaj, our blind or erring government of life. A loose republic once of wants and needs, life now obeyed to a diviner rule. For initially it's a republic of wants and needs. I want this, I want this, I want that. Then it becomes something else. It becomes a subservient to divine rule, slave of the divine, servant of the divine. In the kingdom of the lotus of the heart, love chanting its pure hymeneal hymn made life and body mirrors of secret joy, and all the emotions gave themselves to God. In everything we begin to see God. Mata, Pita, everything. And everywhere. So all these emotions gave themselves to God. In everybody, whatever be the outer relation, you will see the divine in them, and accordingly we are guided. In the navel lotus broad imperial range, its proud ambitions and its master lusts were tamed into instruments of a great calm sway to do a work of God in earthly soil. So ambition changes into servitor of the divine. In the narrow, neither centers petty parts, its childish game of daily dwarf desires was changed into a sweet and boisterous play, a romp of little gods with life and time. And then he continues, and toward the end, how this yoga proceeds from above downwards. There is the streaming in of the mother's force. Some people feel it actually as a thrill passing from the head to toe. This descent is one of the main aspects of the yoga. The beloved depot of our thoughts and acts, she streams into us with her unbound force. Into mortal limbs, the immortals, rapture and power. An inner law of beauty shapes our lives. Our words become the natural speech of truth. Each thought is a ripple on a sea of light. Then sin and virtue leave the cosmic lists. They struggle no more in our delivered hearts. All the time we are worried. Sahi hai, galat hai, sahi hai, galat hai. Then you act according to God's natural right, natural truth.
Our acts chime with God's simple natural good or serve the rule of a supernal right. All moods, unlovely, evil, and untrue, forsake their stations in fierce disarray and hide their shame in the subconscious dusks. Then lifts the mind a cry of victory. O soul, my soul, we have created heavens. This is the way transformation proceeds. I'll stop with one poem of Sri Aurobindo which describes this, several poems, but one of them, one of my favorites, I think many people's favorite, must be The Golden Light. The golden light came down into my mind. The grey, the golden light came down into my. You want to give me? Then it'll fine. I'll read it from there. You'll have to probably. Okay. I remember, but it's okay. We can read it. The golden light, thy golden light came down into my brain. The grey and the grey rooms of mind, sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine. A pain song of thee, my single note, my words are drunk with the immortal's wine. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. Okay, Gemma, we'll meet in the afternoon and then we'll have the question answer sessions.